today's cinema is not conventionally what we've known cinema to be. Today, cinema is any kind of film, and film can be interpreted in many, many ways. There are many applications, there are many genres, there are many disciplines, but the language of cinema remains the same. And what is the language of cinema? The language of cinema is how to depict a story visually, seamlessly, through an interpreter called the camera, which is what comes in between the performer and the audience, and which interprets the dramatic narrative, which what we call a dramatic narrative. Whether it's a documentary, whether it's short fiction, whether it's advertising, whether it's a journalistic work, everything is dramatic, everything is drama in it. So there's an inherent drama in whatever we are depicting through film. And today we are consuming more films on the net, we are consuming more films on OTTs and other streaming platforms rather than in cinema halls. That's because things have changed, times have changed. Appointment television is out. Nobody really sits in front of a TV waiting for a certain show at a certain point in time. We'd rather watch it at the click of a button at our leisure and at the time we have when we want to watch it. So appointment TV is out. Appointment cinema is also out. Thanks to COVID, cinema halls shut for a long time. So we got used to watching more and more stuff on the net. And before you knew it, everything got compressed, and the OTT space became the most watched and the most popular space in cinema. So what is film today, or what is cinema today? It is basically nothing but a medium which is recording a certain narrative for you in a certain format, and these days all formats are mostly digital. Film is also out, so times have changed, things have changed since I started making films. When I started making films, there was only film, and then there was analogous video. And today, you've skipped a generation, you've come straight to digital video and digital content. And the smartphone has become the device to do everything. Like Sir said, there are films being made on the smartphone. And today, TV channels are shooting most of the stuff on smartphones, on iPhones and other phones. And so the device or the recorded medium or the medium of recording doesn't matter anymore. It is how you're telling the story and what story you're telling. And what is storytelling? We're all stories. We all come from stories. We were stories all our lives. Our lives are stories. What we see around us are stories. Life itself is a story. Whether you take a slice of it, whether you take one day in your life, or whether you take generations of your family, or whether you take a few years of your life and compress it. We have to compress time and space to make a film. Any film is a compression of time and space. And the moment you compress that story into a certain time, we call real time as opposed to real time. Right? Andy Warhol was a famous artist. Jim Morrison of the Doors, if you've heard of his name, was highly influenced by him. Andy Warhol made a film called Sleep. Very short, a woman sleeping for a few hours. Now, how boring would that be? How long can you watch somebody sleeping with nothing else happening? And that is actual, pure documentation. Pure as is, where is shooting of an event which is happening. So you need something to conflict with the thesis. If the thesis is a woman happening, then a woman sleeping, you need somebody to come and wake her up. That's the antithesis. So there has to be drama. What is drama? Drama is primarily hero versus villain as we know it. I mean, even today, villains and heroes have become kind of, submerged and subsumed, because none of us are black or white anymore. We're not Maryada Purushottams, though he may be the ideal, right? We're far from it. We're all grey. There's no black, there's no white, there's no real Ravan, there's no real Ram. Yeah? So we're all in the realm of grey, on the grey scale. Why are we in the realm of grey? Because none of us are perfect. And all of us have our flaws, all of us have our own interpretation of life and how we live it. And our stories reflect the same thing. And therefore, the entire type of storytelling, the type of stories we hear, we see, we watch, we read, have changed with time, as has the interpretation of story into film changed with time. I'll start with some fundamentals here. Now, I'll give you one example. So I was talking about Akshay Kumar. I'll just give you one recent article I was reading, so I copy-pasted a bit here to start the proceedings with, is that the combined performances of Rajnikant's Jailer, Sunny Deol's Gadar 2, Akshay Kumar's OMG 2 and Chiranjeevi's Bhola Shankar have set an all-new time theatrical gross box office record. 1,200 crores. 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 1,200
for Indian cinema industry. Numbers released by the Multiplex Association of India reveal that in the August 11th to 13th weekend, the collections have been 3.9 billion rupees, $47 million. So on the one level, I'm saying that cinemas are not attractive anymore. On the other level, in the last week, these kind of numbers are being grossed. Now, why are these kind of numbers being grossed? And what somebody today in the morning asked me a question that would people stop going to cinemas to watch films? And I said, no, India lives in many generations. We have the rocket and the bullock cart, and both of them coexist. Similarly, cinema will never really go out of fashion. Only thing is, films that are larger than life, films that depict big stories, big canvas, which are not going to be fun to watch on a laptop screen or on a small screen or on a phone, which is where we consume our stories these days, we would rather go to the cinema and watch the film. And all these films that have grossed this huge amount of money are primarily films which are based in the foundational heroic narrative of Indian cinema, where the hero is everything. So it's all heroism, right? This is changed on the smaller screens. I'll come to that a little later. But it's all hero-based. It's all the larger-than-life hero, the one who solves all problems, the one who surmounts all the issues that may come in his way to reach his goal, to reach his lakshya, right? There's a lakshya, there's a goal for every hero. I mean, I don't know why you applause, but all right. Wow, okay. हिंदी में बोलूं तो बोलिए ना, हिंदी में बोलूं, पर हिंदी में मैं इतना अच्छा नहीं बोल सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, हिंदी में इतना अच्छा नहीं बोल सकता। तो चलिए हंस लीजिए भाई साहब, सॉरी। तो ये जो बड़ी फिल्में हैं, और अगर आप हॉलीवुड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बड़ी फिल्में जो आजकल चलती हैं वो ज़्यादातर साइंस फिक्शन की फिल्में चलती हैं, फैंटेसी की फिल्में चलती हैं, या टॉम क्रूज की फिल्में चलती हैं, या मार्वल्स ऑफ द गैलेक्सी वाज द लास्ट थिंग आई सॉ। मेरे को समझ में नहीं आया वो फिल्म बनी क्यों, बट एनीवेज उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, बहुत बड़ी फिल्म थी, वो अपनी बात है। तो हमेशा अपने से बड़ा अगर आप कुछ देखना चाहें तो आप सिनेमा हॉल में जाएंगे। अगर आप अपने आई लेवल पर, या कहानियाँ जो आपकी लाइफ को रिफ्लेक्ट करती हैं, आपके आसपास की ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट करती हैं, उनके लिए सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखना ज़रूरी नहीं है। अब एक और समस्या ये है कि अगर आप सिनेमा हॉल में जाएंगे तो आपके 1000-1500 रुपये आराम से खर्चा हो जाएंगे। अब आप कितनी बारी जाएंगे सिनेमा हॉल में फिल्म देखने परिवार को? आप लोग खैर बच्चे हैं, मेरा आपका परिवार नहीं है, बट अगर आप परिवार को लेके हर हफ्ते फिल्म देखने जाने लग गए तो आपको पता चलेगा कि आपके पॉकेट में बहुत बड़ा छेद हो गया है, वो समस्या हो जाती है कुछ टाइम के बाद। हाँ, तो इसीलिए टेलीविज़न है, इसलिए OTT है, इसलिए अलग तरह के मीडियम्स हैं जहाँ पर आप एंटरटेनमेंट को कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो बड़ी फिल्में हैं, वो बड़ी फिल्में हमेशा बड़े पर्दे पर ही बनेंगी, बड़े पर्दे के लिए बनेंगी, बड़े पर्दे पर देखी जाएंगी। अब अगर आप अवतार इसके ऊपर देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। उसके लिए कैनवस चाहिए, स्केल चाहिए, 35 mm चाहिए। तो but like I said, heroism, it's all about heroism. And what is heroism? First you need to understand what is heroism, why is heroism so important, and then how the dynamic of the narrative changes as per what kind of hero, or today heroines. I mean आजकल बहुत सारी फिल्में हैं जहाँ पर हीरो एक महिला है, वो मर्द नहीं है, तो मर्द का जो हीरोइज्म है वो बहुत हद तक बदल चुका है। अगर आप फिल्में देखें, आप और मिडल ऑफ द रोड सिनेमा देखें, स्पेशली जो ज़्यादा यथार्थ दर्शाती है, जिनकी कहानियाँ ज़्यादा रियलिस्टिक होती हैं, क्योंकि हम में से कोई भी यहाँ पर जो बैठा है वो सलमान खान नहीं है। खैर सलमान खान भी बहुत बड़ा झूठ है, वो अलग बात है, और जो वो दिखाता है स्क्रीन पे, वो 50 लोगों को मारता है। या रजनीकांत तो खैर सबका ही बाप है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जब ऐसी कहानियाँ आप देखते हैं तो हाँ, आपको बड़ा अच्छा लगता है। और आप एक कॉन्सेप्ट है व्यूइंग में और सिनेमा में, उसको कहते हैं सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये बोलता है कि आप अपना लॉजिक छोड़ दीजिए और आप वो हीरो जो भी करना चाह रहे हैं उसमें तल्लीन हो जाइए, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो अगर टाइगर से लड़ रहा है तो टाइगर को भी मार के आगे निकल जाए। हालांकि आपको ये भी पता है कि टाइगर ने एक थप्पड़ मार दिया, उसका जबड़ा बाहर आ जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, बट आप चाहते हैं कि वो टाइगर को मारे,
क्योंकि वो आपका हीरो है, आप उसकी कहानी में इन्वेस्टेड हैं, आप उसको चाहते हैं कि he surmounts all obstacles and reaches his goal, that he achieves what he is set out to do, which is why heroism is such an important thing in all storytelling. And all our stories, fundamentally, whether you like it or not, come from Ramayana and Mahabharata, which are all about heroism at some level. All of them. जितनी उनमें कहानियां हैं, जितनी वो कहानियां, उनमें सब में कहीं ना कहीं जो उसके पात्र हैं, जो भगवान भी हैं एक लेवल पर, वो ऐसे ऑब्स्टिकल्स को समाउंट करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं जो कि कहते हैं ना ह्यूमनली इम्पॉसिबल। वो हम सिर्फ कहानी में सुन के हमको लगता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता था। और हमारी सारी जितनी फिल्में हैं, जितनी कहानियां हैं, वो सब उनका फाउंडेशन वो दो एपिक्स हैं हमारे, और ये कभी नहीं बदलेगा। कहीं ना कहीं उनसे सब राइटर्स, फिल्म मेकर्स प्रेरित होते रहेंगे। आज भी कितनी फिल्में जो बन रही हैं, अभी रिसेंटली एक पिक्चर आई थी आदि पुरुष, पता नहीं कितनों ने देखी नहीं देखी, वो भी रामायण पर ही बेस्ड थी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको माइथोलॉजी या हमको एपिक में जाने की ज़रूरत है, लेकिन हम अल्टीमेटली जितने भी रस हैं जो हमारी कहानियों में हैं, उनका कहीं ना कहीं फाउंडेशन हम वहीं पर पाएंगे। वेदर consciously or unconsciously or accidentally, we eventually go back there only, somehow, anyhow. Why? I don't know. That's probably because our ethos is that. Probably because those are the stories we grew up with. Probably that's what our grandmothers taught us. Right? We all grew up listening to stories from our grandmothers. At least I did. I'm sure all of you did also. So, this is very, very important to understand. If you want to understand cinema, आपको अपना फाउंडेशन समझना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ से आते हैं, आपकी कहानियाँ कहाँ से आती हैं, आपका कहानी के जरिए आपकी जो मोरालिटी है, मोरालिटी इज़ अ वेरी नेबुलस वर्ड, बट स्टिल आपकी जो मोरालिटी है, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं ज़िंदगी जीने के, वो कहाँ से आते हैं? वो फाउंडेशन उनका उन्हीं एपिक्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कहानी उन्हीं से प्रेरित है। या चाहे वो पंचतंत्र हो, चाहे वो जताका टेल्स हो, चाहे जो भी हो आपने बचपन में पढ़ा हो, वो सारी कहानियों का फाउंडेशन वही है। तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम कहानी कह रहे हैं या जब हम कोई कहानी को गढ़ रहे हैं, उस कहानी का जब फाइनल जो आउटपुट देखते हैं सिनेमा स्क्रीन पर, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका फाउंडेशन क्या है, इसके रूट्स क्या हैं। जैसे एक फिल्म यहीं पर बनी थी भोपाल में, मेरे गुरु ने बनाई थी, प्रकाश झा जी ने। उस फिल्म का नाम था राजनीति, आपने शायद देखी होगी। राजनीति इज बेस्ड ऑन द महाभारत, फंडामेंटली इट्स बेस्ड ऑन द महाभारत, दो इट इज बेस्ड इन मॉडर्न डे पॉलिटिक्स, आज की राजनीति दर्शाती है। लेकिन अगर आप उसके पात्र देखें, पूरा उसका ताना बाना देखें, जिस तरह से वो कहानी गढ़ी गई है, वो महाभारत का डिपिक्शन है ना। सिमिलरली आप कई फिल्में हैं, ये जो चीज़ें हैं, अगर आप इनको जितना समझेंगे उतनी अच्छी तरह से आप कहानियों को समझ पाएंगे। अगर आप कहानियों को समझ पाएंगे तो शायद आप कल को जाके अच्छी कहानियाँ लिख पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कहानी समझना, कहानीकार बनना, कहानी लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप फिल्में बना सकते हैं। अगर आप राइटर नहीं हैं तो आपको कम से कम राइटिंग की समझ होनी चाहिए। आपको कम से कम राइटिंग की फाउंडेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। हमने ड्रामेटिक नैरेटिव एक टर्म यूज़ किया। ड्रामेटिक नैरेटिव क्या है? ड्रामेटिक नैरेटिव तीन चीज़ें होती हैं: प्रीमाइस, कॉन्फ्लिक्ट, रेजोल्यूशन। आपके कैरेक्टर का प्रीमाइस क्या है, वो शुरू कहाँ से करता है या करती है, उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या ऑब्स्टिकल्स को झेल के आगे बढ़ना पड़ता है, और फाइनली उसका जो लक्ष्य है प्राप्त करने का रेजोल्यूशन कैसे होता है। ये कहाँ से आता है थिएटर से। थिएटर इज 3 एक्ट स्ट्रक्चर। उसी को हमने अप्लाई किया सिनेमा में। सिनेमा और थिएटर में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? आपने बीच में कैमरा रख दिया। पहले जो परफॉर्म करता था वो लॉन्ग शॉट में करता था, आप उसको एज एज वेरियस बेसिस पर परफॉर्मेंस देखते थे। बीच में कैमरा आ गया, कैमरा ने आपको अलग अलग एंगल्स, अलग अलग मैग्निफिकेशन, अलग अलग एम्फेसिस के हिसाब से कहानी दिखानी शुरू करता है। अगर आप कैमरा को निकालते हैं, वापस थिएटर में चले जाएंगे। आप कैमरा लगा के उसको शूट करेंगे तो सिनेमा बन जाता है। तो इट इज अ मीडियम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रामेटिक नैरेटिव। फंडामेंटली दैट इज व्हाट सिनेमा इज। अब अगर आप फिक्शन को छोड़ के नॉन फिक्शन में जाए, डॉक्यूमेंट्री में जाए, तो डॉक्यूमेंट्री में अगर आप ऐसा ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कुछ है नहीं और इंटरनेट नहीं है, ये इसका प्रोजेक्शन नहीं है, तो आपको ग्राफ दिखाता मैं। अगर आप ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट जी